Good morning. Today in our Guftagoo session, we will learn about the services of Comsats University Islamabad Campus Library. For this, we have invited Hafiz Abdur Rahman Sahib. Hafiz Abdur Rahman, a senior librarian, is currently heading the library of Comsats University Islamabad Campus. He has been associated with this library for more than 2 decades. He holds master's degree in library sciences from Sheffield University, UK, and is currently pursuing for his PhD in Pakistan. Thank you, sir, for spending time and joining us today. On behalf of Faculty Development Academy, I welcome you to our question answer sessions. Thank you. Thank you, madam, for inviting me to this question and answer session. And I'm hopeful, inshallah, the session will be quite informative for the student, faculty, and CUI community in general, inshallah. Thank you, sir. Let's proceed to question answers, please. First of all, we would like to know about the role of library in teaching and learning process at like higher level, like just say हमारी university में. Well, the role of library in any university or higher education institution is very important and vital. Once a wise man says that every academic library, or you can say any library which is operating inside the university, it's the backbone of any, educational institution. And the basic purpose, the basic role of the library is just to support the academic and research activities of any educational institution. And same is the case here with the Junaid Zaidi Library. Here we are taking care of all the information needs of our, students, of our teaching staff, of our researcher and faculty. Yeah. So without any library, you can't even imagine the development of any, educational institution. Though nowadays we are, emphasizing on the research culture and the research productivity, and without library, even you can't imagine that how a university can improve their research productivity, because library is the only place where we can support all sort of research activities of any educational institution, and same is the case with Comsats University and its library. Yeah. So what services are you currently offering? Well, we have a dedicated section which is totally and wholly solely working for the research productivity of the institution, where we are taking care of all our researchers. We are providing them the research support services, that how they can publish their research, where they can publish their research, what is the impact factor journals, how they can improve their H-index. Apart from that, we are providing them different sort of route, and that there are different sort of you can say where they can publish, which is the open access journals, how they can publish their work. We are just helping them to avoid any sort of plagiarism. We are, working on their referencing management, all sort of different, there are a long story, yeah. Anything which is relevant and which is helpful in their research, Junaid Zaidi Library is taking care of it, yeah. So these are the dedicated resources you are. We have, you can say the dedicated databases. We have the research cubicles. We have dedicated staff for them, which is totally taking care of their works here. We have a lot of, research cubicle. We have a dedicated floor in the library where they can sit in with peace of mind and they can just carry out their research work. And we can, provide them help throughout the globe as well. If anything they are looking for is not available in the specific library, we are connected with the different leading libraries of the world. Yeah, they just put a request that I'm working on this specific area of research, and then this is our responsibility to provide them all sort of stuff that what is happening around the globe in that specific area.
So for that purpose, we are connected with different leading libraries like Library of Congress, Washington DC, like British Library, Yorkshire, like National Library of Australia. The thing is that जहाँ से भी हम देखते हैं कि हाँ जी उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, जो उनकी रिसर्च के लिए, जो उनके प्रोजेक्ट के लिए, we go for that. And we have a different sort of, MOU signed with different libraries. We have the International Library Loan Service. We do have the National Library Loan Service. अगर हमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती, then अपनी लाइब्रेरी में नहीं है, पूरे पाकिस्तान की लाइब्रेरीज है, अगर पाकिस्तान की लाइब्रेरीज में नहीं है, then we go abroad. हमारे डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ है, वो हमसे सर्विसेज ले लेते हैं, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वाइस वर्सा. And that's how we are getting the information need of our, researchers. Sir, how they can get access to HEC's digital library? Well, it's very simple process, yeah. HEC access is through IP. Once you are in the premises of CUI, you don't need any sort of login and password. You just switch on your computer and you will get all the digital resources available through HEC Digital Library. For this, you will have to be part of Comsats University, whether you are a student or a faculty member. A faculty member, yeah. Because the access is through IP, okay? And when you will switch on your computer, your laptop, any sort of gadget you have, even your mobile, then if you are using the internet of CUI, automatically you will be connected to the HEC Digital Library. It's user friendly. Yeah, and our users, our researchers are the luckiest in the sense that we are also providing the same access at their doorstep as well. If they want to use the HEC Digital Library, not even HEC Digital Library, even all the digital resources, because our library we are claiming that the first library providing, all sort of web-based services, yeah. So whenever they are sitting, wherever they are sitting, they have just, to connect this library and, from any part of the country, from any part of the world as well. But that is when we are talking about the remote access. If they are outside the campus, they have to take, the connection through VPN, and that is via login and password. We provide them the login and password and they can connect to the library, the HEC Digital Library, from anywhere and everywhere in the world. Yeah. So you mean to say there was no impact of COVID-19 on the usage of library? No. Like they can use up it? To some extent we can say that, the beauty of the library is the physical, availability of the library user when they are sitting inside, the premises and the library. So the staff and the people, the people who are working in the library, they also get motivated to serve them in a better way, yeah. But as far as the COVID-19 impact is concerned, Alhamdulillah, we are providing more services to our student, especially in this, because we have all the facilities. We are available on mobile app, we have a dedicated website, we have the personalized services, library is available 24/7. They just, send us an email, a query, and within no time, we are, entertaining our users. And the ratio is quite good, especially in this pandemic, that people are making good use of all our library resources, digital resources, because the library, we have a mobile app with the name the library in your pocket. You just switch on your mobile, and you can get access and you to can library. access all the stuff available inside the library. Yeah. So how new students can become part of the library, even faculty members? Yeah, it's very simple, process. Once they get registered, the admission process is complete, and they get the registration number. They have nothing to do anymore. They just, because once the data is compiled by the admission department, then you send an email to them. We put a request to the admission office, and they completely transfer the data of all the students to our main system, the library management system. We are using one of the best international library management system in our library. And then what students are supposed to do, they just come at the counter, show their membership number, and within no time, their membership is activated and they can avail all the facilities. Yeah, we are
just on a single click. We are just waiting for the visit of our library user. When they come, they just show their registration number. You just like collect the data and send an email to contact them? Like that. We collect the data, then we just want to see the physical appearance of the student. Sometime, because around 2,000 students have been registered, but sometime it happens in the mid of the first week, second week, majority of the students, they left the institute, they go somewhere else if they have taken admission in some other institution. So just to avoid date miss, we just, for the first time, they just come to the library counter and show the registration number. Yes, we are enrolled, and at the back end we have all the data. We just confirm, yes, this is the student, and that's okay. We activate the registration, and that's it. Nothing else. Yeah. कुछ भी उनको करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट वो लेके आ जाते हैं कि हाँ जी यस, डेटा तो हमारे पास होता है ऑलरेडी, लेकिन उसमें होता ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी अप्लाई किया होता है. Exactly. तो सम टाइम वो प्रेफर करते हैं कि हम स्विच कर जाते हैं. तो दिन अगर हम 2000 ही एक्टिवेट करते हैं, बजाय इसके कि जो एक्चुअल हमारे पास फिर फिगर होता है वो तभी होता है जब बच्चे फिजिकली आ जाते हैं, वो हमें बता देते हैं कि हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा. वो जस्ट एक एक्टिवेट का बटन होता है, वो हमारे सिस्टम में वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड दैट्स इट. टोटली 2 to 3 मिनट्स का प्रोसेस होता है, नथिंग मोर देन दैट. Like if they borrow a book, तो अगर like पूरा सेमेस्टर के लिए ऐसा हो सकता है कि वो एक बुक को इशू करवा सकते हैं. What if they don't return the book? Yes, there is a policy, but depend upon कि हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि we are dealing with around 10,000 students ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए कि वो हर एक स्टूडेंट को एक बुक प्रोवाइड कर ले. उनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हाँ, होता ये है कि हाँ जी वी हैव अ 10% पॉलिसी. ठीक है, 100 स्टूडेंट के लिए हमारे पास 10 बुक्स होती हैं. वो नॉर्मली ऐसा होता है कि अंडर ग्रेड को हम दे आर अलाउड टू इशू 2 बुक्स एट अ टाइम फॉर 1 month. उसमें होता ऐसे है कि हम ये चाहते हैं कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम एंटरटेन कर सकें, और जो 1 month के लिए बुक इशू कर लेता है, इफ़ स्टिल दे रिक्वायर द सेम बुक फॉर मोर 1 month, वो कम से कम लाइब्रेरी काउंटर पे आता है. वी विल चेक कि आइदर किसी और स्टूडेंट को तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होती देन दे कैन री इशू द सेम टाइटल फॉर 1 more month. या तो इसी तरह हम उनको करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं. दे कैन कीप इट इवन फॉर अ सेमेस्टर इफ एनी अदर स्टूडेंट डोंट रिक्वायर दैट. So this policy is same for faculty members? फैकल्टी लिटिल बिट फैकल्टी बिकॉज उनके सेमेस्टर होता है, एंड दे वो एक कोर्स होता है नॉर्मली. सो इट डजंट, स्टूडेंट्स के लिए तो चूंकि एक सेमेस्टर में उन्होंने 6 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, सो दे रिक्वायर 6 बुक्स. फैकल्टी के तो एक बुक होती है, सो दैट कैन बी डन. नॉर्मली हम उसके साथ अब ये भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक्स है उनके सॉफ्ट कॉपीज भी हमने अरेंज की है. तो जो स्टूडेंट का ज़्यादातर मसला अल्हम्दुलिल्लाह वो अब काफ़ी हद तक हल हो चुका है. So they don't need to issue that soft copy? No, वो तो जस्ट आ जाते हैं. हाँ, they can take, वो फ्लैश लेके आ जाते हैं, कोई उस पर हम उनको दे देते हैं. सो दे कैन इवन ये कि अभी हम एक कंसोर्शिया भी बना रहे हैं जिसमें जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो ऑलरेडी एक ड्राइव पे अवेलेबल होंगे, वो अपने घर से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकेंगे आराम से. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. उसमें कुछ कॉपीराइट की इशू थी, इसकी वजह से हमने कुछ अपनी चीज़ें परचेज कर ली हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक अब हम प्रिंट बुक्स के साथ साथ उनको सॉफ्ट फॉर्म में भी टेक्स्ट बुक्स जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जो स्टूडेंट्स के मसले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं. That's good, sir. Any further plans you intend introducing for further expand or improve the library system? Yeah, definitely there is always a room for improvement here. Library science is basically working on 5 laws, and the 5th one is that library is a growing organism. ठीक है ना जी. तो साथ साथ जितने हमारे और कोर्सेज आ रहे हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. फ्रॉम डे फर्स्ट इस लाइब्रेरी का विजन थोड़ा सा डिफरेंट हमने रखा है कि वी आर वर्किंग ऑन इट दैट व्हाई नॉट इट शुड बी सॉर्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू all other units, educational institution,
government organization, special organization, and we are providing different sort of services, even in the country and outside the country as well. Yeah. So we are in the process to take it the position inshallah. एक तो ये है जो हमारे अपने यहाँ के लोग हैं, and we are in the process कि हाँ जी अभी इस तरह का एक और बिल्डिंग हमें मिल जाए. So we are just working कि जो हमारी एक रिसर्च लाइब्रेरी हो जाएगी टोटली, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होगी, एंड एक हमारा सेक्शन जो रह जाएगा वो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए रह जाएगा. सो डे टू डे नई नई चीज़ें आ रही है, डिपेंड अपॉन, क्योंकि आजकल की जो कस्टमर है या जो आजकल की यूज़र है उससे टोटली डिफरेंट ना. पहले तो ये होता था कि हम जब लाइब्रेरीज़ में स्कूल लेवल पे अव्वल तो जाते ही नहीं थे, जाती भी थी तो बड़े जल्दी से भाग निकलने की सोचते थे कि गए, और एक तो लाइब्रेरियन ऐसे होता था ना कि गुस्से वाला होता था. तो हम आजकल बच्चे ऐसे चाहते हैं कि हाँ जी दे आर लुकिंग फॉर एनवायरनमेंट, और एक्साई की ये है, और हमारी अभी ट्रेनिंग भी मेरे स्टाफ की भी यही है. मैं उनको बार बार यही कहता हूँ कि डोंट इम्पोज योर डिसीजन ऑन द लाइब्रेरी यूज़र. दे के वो क्या चाहते हैं, Let them decide. ठीक है. हाँ, लेट देम डिसाइड कि हाँ जी हाउ दे आर फीलिंग कंफर्टेबल ना. कि उसको अब देखेंगे ना, ये कलर कोडिंग स्कीम देख ले, या जिस तरह बच्चों के लिए, हाँ जी मेन मोटो भी इसके पीछे ये था कि हाँ जी लाइब्रेरी बिल्कुल खाली पड़ी होती थी तो बिल्डिंग बनाना मकसद नहीं है. द मेन थिंग इज़ कि हाँ जी जिसके लिए आपने बनाया है ना वो उसको यूटिलाइज कर लें. सो बिलीव मी कि वी टुक 3 months टू फाइनलाइज जस्ट अ कलर कोडिंग स्कीम ऑफ दिस लाइब्रेरी. हम जी हाँ जी 3 महीने तक हम सर्वे करते रहे. हम 3 डिफरेंट पिलर्स पे हमने डिफरेंट कलर स्कीम किए. एक जो हमारी सरकारी चल रहा है ऑफ वाइट इस तरह का सिलसिला था, एक हमने टोटली पब कलर डार्क ब्लू एंड ब्लैक, एक हमने ये मल्टी कलर जो आपको रंग में येलो ये आप भी जो नजर आ रहे हैं. हाँ जी दिन वी मेक अ सर्वे फॉर 3 months. जो भी बच्चे आते थे हम उनसे पूछते थे कौन सा कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. When more than 90% of the user of the visitors वो agree हो गए, then we finalize the color coding scheme. And the only library in the country again that we are receiving around 3,000 students per day, सुबह से लेकर शाम तक, and it's a very huge number, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए कि हाँ जी हम अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को अट्रैक्ट कर ले. वंस दे विल कम इनसाइड द लाइब्रेरी, वो फिर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई किताब, कोई मैगजीन उठा लेंगे. एंड दिस इज़ द बेसिक पर्पस कि हाँ जी हमने कैसे हैबिट डेवलप की एग्जैक्टली कि हाँ जी एक रीडिंग कल्चर हम प्रमोट कर ले, एक रीडिंग हैबिट प्रमोट कर ले. क्योंकि हमारे बच्चे नॉर्मली बस गूगल करके, यूट्यूब करके कहीं से असाइनमेंट बना के ना वो जमा कर देते हैं. एक्चुअली नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है. एग्जैक्टली. सो ये था कि उसमें हम काफ़ी हद तक तो वही बेसिक हमारा डे फर्स्ट सेट था कि हाँ जी पहले हम बच्चों को लेके आएँ. दिन बच्चों की जब तक आप डिमांड पूरे करेंगे वो लाइब्रेरी में आते रहेंगे. एनवायरनमेंट है, कूलिंग है, हीटिंग है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई की अवेलेबिलिटी है, डाइवर्सिफाई मुख्तलिफ सीटिंग है. यही बेसिकली आजकल के स्टूडेंट को, क्योंकि वो पहले होता था कि आप कंप्यूटर दे दे, आप ये दे दे. आजकल हर एक बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, टैबलेट्स है, मुख्तलिफ किस्म के गैजेट हर किस्म के हैं. दे आर लुकिंग फॉर अ स्पेस, फॉर एनवायरनमेंट के हाँ जी वो बैठे वहाँ पे वो रिलैक्स होके जो है ना अपना काम करे. सो वी आर इन द प्रोसेस इंशाल्लाह. डिफरेंट चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अपने प्रायोरिटी तो अपने इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी डिमांड हो वो पूरी करेंगे. साथ साथ वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ हम अपना रोल प्ले करें कि अपने कंट्री के लिए या नेशन वाइड अगर कोई हम कुछ कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट. जितने भी लीडिंग आपके स्टेट बैंक है, अभी भी वर्ल्ड बैंक है, आपसे मैं कहा था थोड़ा सा लेट आऊँगा, टीम आई थी. वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ना, जहाँ से भी हमें कुछ वर्ल्ड बैंक की लाइब्रेरी की हमें हाँ जी कोलैबोरेशन हो जाए. और सेनेट है, पार्लियामेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, मुख्तलिफ उनकी लाइब्रेरीज भी हमने वो की है, डेवलप की है और साथ साथ कर भी रहे हैं. तो लॉट ऑफ प्लेन्स आर देयर इंशाल्लाह. वी जस्ट टू फाइनलाइज इट कि हाँ जी समराइज इट कि ये ताकि इस लाइब्रेरी को मैं चाह रहा हूँ कि इवन ये कि कंट्री लेवल पे भी किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, सो द फर्स्ट थिंग शुड कम इन देयर माइंड दैट मस्ट बी जुनैद ज़ैदी लाइब्रेरी कि हाँ जी हम वहाँ पर जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम लोग लाजमी हमें अप्रोच करते हैं कि शायद आप हमें कुछ दे सकें. सो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग. Thank you, sir. Any message you would like to give to students or faculty members? Well, we have made an investment
اتنی اچھی لائبریری ہے. اینڈ وٹ وی بلیو ون تھنگ کہ ہاں جی جب تک یہ ریسورسز اور یہ یوٹیلائز نہیں ہوگی تو دیٹ وڈنٹ بی a good justification for all the investment we have made. جتنی بھی انفارمیشن نیڈز ہیں آپ کی, forget about that کہ ہاں جی کہاں ہمارا یہاں پہ جو نئے زیدی لائبریری میں جو ایک پالیسی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وی نیور سے a word no to our customer. ایک دفعہ اگر آپ کو کسی جو انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہاں جی اف یو فیل کہ ہاں جی آپ کو کوئی لٹریچر سرچ میں یا کوئی اینی پیس آف انفارمیشن آپ کو چاہیے, آپ ضرور ایک دفعہ لائبریری وزٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ یہاں کا اسٹاف, یہاں کا پورا سسٹم, یہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی آپ کو ہیلپ فل ہوگا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایون یہ کہ کہیں سے بھی ہو, ونس یو لیٹ اس نو then this is our responsibility کہ ہاں جی ہم آپ کے اس انفارمیشن نیڈ کو انشاءاللہ کہیں سے بھی پورا کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. Thank you, sir. From today's session, we have learned that Junaid Zaidi's library, colorful interior, research cubicles, study carrels, and discussion room provide a refreshing and rejoicing environment that helps students and even faculty members to learn and study in a comfortable and conducive environment. And we hope that our students will further enhance the usage of library. Thank you. For any queries or suggestions, you may contact Hafiz Abdur Rahman Sahib. His contact details are displayed on our screen. Thank you.